बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका पीबीए फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर का ये सोल्यूशन लेके आपके पास आया हूँ। कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो कंप्यूटर साइंस के एक टीचर हैं उन्होंने जैसा मुझे सोल्यूशन बताया है मैं वैसे ही इसको पोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट हिज ओपिनियन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेट नंबर ऑफ फील्ड्स 7 and number of number of records is 6. Then change the width. Name the primary key patient ID. So it's patient ID either. And then it's field name and MS Access type. तो patient ID फर्स्ट वाले में है। patient ID आई थिंक ये ज़रा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। patient ID के साथ है नंबर, डाटा टाइप। नेक्स्ट इज patient name. नेम के साथ है शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज जेंडर, और जेंडर भी शॉर्ट टेक्स्ट ही है, तो जस्ट रिपीट कर दिए। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और वो है डेट एंड टाइम। नेक्स्ट इज नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग। उसमें भी अगेन लिख रहा हूँ ऑर्डर पे। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो डाटा शीट व्यू है उसके आंसर्स लिख रहा हूँ। इट इज़ पेशेंट आईडी की जगह पे है 2, और नेम उसका होगा पेशेंट नेम सना सेकंड कॉलम में, and then CNIC is not displaced and gender is female. Then date of birth is also not displaced. Blood group is B negative from the table, and dengue is the disease. Next one जो है that is 5 Ahsan, male, O positive, and dengue also. Okay, moving on to the next question, question number 5. और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्रिएट द एमएस एक्सेस क्यूरी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द टेबल पेशेंट, फिल द रेलेवेंट बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस ही डायरेक्ट बता देता हूँ। शो, so this one is ticked, this one is also ticked, this one is also marked, so every one of these are marked, and the table shows the field shows patient ID up here, name here, then CNIC, and then gender, date of birth, blood group, and disease. And in the table you had patient, और ये all throughout ये patient ही है, यहाँ से सारे रो तक patients ही है। Next is criteria, and the criteria I'd have male here and the gender in the criteria row, and B positive the blood group, B positive. This is number 5 done. Number 6 is consider the form design in MS Access. List the name of 4 variables, layouts of forms. First one is columnar, I think it is. Next is tabular, data sheet, and fourth is just
जस्टिफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट इज पार्ट बी, सेक्शन बी ऑफ द पेपर। पिक्चर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, सीरियल नंबर एंड नेम। तो इनपुट में है जी स्कैनर है, ये तो कुछ मुझे भी पता थी। नंबर 2 इज स्कैनर, then there is number 6 as keyboard, which is also input device, keyboard, and number 9 touchpad number 9. And the output devices names are number 4 is printer, and number 5 is LCD, number 8 is a fan, this is also an output device. Network is number 3 is fiber optic cable, or you can say optical fiber. No, it is not optical fiber, it's fiber optic cable because it's a cable. Fiber optic cable. Next one is number 7, which is a switch or a hub. Call it a hub or a switch. Okay, next is question number 2. A port के name बताने हैं. This one is parallel port, and this one is VGA. ये कुछ मुझे नज़र आ रहा था. This one is USB. उसके बाद I think mouse की है PS2. Yes, PS2 है. और next आखिर में है I don't know ये क्या लिखा है. फायर बॉल है, ये पता नहीं फायर वर है. I don't know, sorry, I couldn't read it properly. Something like this. Sorry about that. B is USB port. USB port. This is B. Complete the step by step procedure by filling the blanks. Actually, step 1 is written. Step 2 is devices and printers. Number 3 is written. Number 4 is printer properties. Printer properties is selected then. Number 5 is sharing, and the last one is share the printer. And I think this is done. So this is your computer PBA. I'm sorry अगर कोई गलती होगी because it is not my subject. लेकिन जैसे मुझे solution रिसीव हुआ था वो मैंने आपको आगे बता दिया. So see you in some other video inshallah. Allah Hafiz.